हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू EduTap। और आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं इस इंटरव्यू में। एंड वी हैव विद अस मिस्टर अनिमेश, who has been selected in the EPFO Enforcement Officer Accounting Officer examination, which was conducted last year. Results जो हैं वो recently announced हुए हैं, Sir. अनिमेश। So Yes, welcome. sir. Thank you, sir. And congratulations first of all, बहुत बहुत बधाई आपको that you have succeeded in this examination. Thanks a lot, sir. ओके अनिमेश, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, आप सभी को मैं अनिमेश के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एंड इट्स सच अ इलस्ट्रियस रिकॉर्ड दैट ही हैज हैड। आपने स्कूलिंग भोपाल से की है। यू बिलोंग फ्रॉम भोपाल, मध्य प्रदेश, Yes, sir. राइट? Yeah. And you have done schooling from Bhopal. You then did your graduation. You did your BTech from IIT Roorkee. Yes, sir. मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, Yeah. राइट? और उसके बाद आपने अनिमेश ने काम भी किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। उन्होंने एक साल के लिए काम किया और उसके बाद ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशंस, द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। Yeah. So since 2016 he prepared for UPSC. Then he has appeared for interviews for UPSC civil services twice, if I'm not wrong. Yeah. And then Yes, he sir. has Twice. also appeared for the interview for RBI and also for SEBI examination in 2022 recently. And then he obviously has finally cleared the EPFO EOO examination. So we can see that you are a very hard working person, Animesh. Thank you, sir. एंड Yeah. सबसे पहले तो निमेश मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाउ आर यू फीलिंग दैट यू हैव योर सीन योर नेम एंड यू हैव स्कोर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यू हैव स्कोर्ड 30th रैंक इन द एग्जामिनेशन ऑफ EPFO. Yeah. Sir, I'm feeling very happy and also relieved at the same time that yes, I finally gotten selected in one of the examinations that I was appearing for. So because it has been some time since I've been preparing for the civil Yes. services, so having secured a rank and a job in a very prestigious organization like EPFO, it makes me very happy, and as well as my family. They're Okay. also a lot pleased. So has the feeling sunk in yet कि इतने time से you have been preparing for examinations, you have been appearing for interviews in various examinations, मतलब just finishing line को आप touch कर रहे हो, but were not completely par of the finishing line. तो यहाँ पर आपने complete किया इस examination को, तो ये feeling अब थोड़ा एहसास हो गया है कि हाँ अब मैं एक officer बन गया हूँ EPFO का। Yeah, मतलब अभी हो रहा है कि it धीरे has धीरे हो रहा started है। to sunk in कि yes, I'll ठीक be है joining this. अनिमेश, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि EPFO एग्जामिनेशन के Yeah. बारे में आपको जैसे कैसे पता चला, हाउ डिड यू डिसाइड और व्हाई डिड यू डिसाइड दैट यू वांट टू अपीयर फॉर द EPFO एग्जामिनेशन? So sir, इसका notification I think it was out in 2020 जनवरी and 2020, January yes. 2020. So उस time पे I had to appear for my interview also. For the first interview for UPSC civil Okay. services, I was appearing. So one of my friends also told me that the form for EPFO has come out, and since this is also an organization which deals which works somewhat related to what I wanted to do in civil services, Okay. so I filled the form then. And उसके बाद I thought कि whenever I get free time मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा EPFO के लिए as and when the date of the examination is announced. So Okay. from there I got to know about it. ओके सो मतलब यू गॉट टू नो अबाउट EPFO, लेकिन जैसे आपने कहा द नोटिफिकेशन फॉर द एग्जाम वाज आउट इन जनवरी 2020 Yeah. एंड देन द एग्जाम गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, और फिर Yes, sir. 2021 में सितंबर में जाके इसका रिक्रूटमेंट हाँ. टेस्ट कंडक्ट हुआ. Yes, So sir. more than a year and a half you Yeah. had to wait for this exam. So Yes, sir. in the meanwhile आपको ऐसा कुछ लगा कि preparation इस exam की regular नहीं हो रही है, and obviously in the meanwhile you were also preparing for UPSC, you were going Yeah. to appear for the UPSC examinations. तो Yeah. how did you manage? इसके लिए plan कैसे किया आपने? मतलब शुरू से सोचा हुआ था कि regularly पढ़ते रहूंगा, या फिर जब date आएगी exam की उससे उस time पे देखेंगे कि कैसे पढ़ना है? So sir 2020 में तो इसका डेट का कुछ आया नहीं था, तो आई थॉट व्हेनेवर द डेट इज रिलीज्ड देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग. आई हैड वॉच्ड द यूट्यूब ऑन वॉच्ड द वीडियो ऑन यूट्यूब. EduTap का वीडियो था रिगार्डिंग द syllabus of the examination and what all subjects we have to prepare. Yes. So a lot of subjects from GS in UPSC also overlap in this. तो मेरे को था Yes. कि at least that I'll be able to manage. जो नया subject है it's accounting and the industrial laws and labor laws.
Yes. So my focus was कि उसको मैं थोड़ा बहुत prepare करते रहूँ. But that also happened in 2021 only. इसका एक्चुअली मई में शेड्यूल आया था कि मई 2022 में एग्जाम होगा. एंड Initially, yes. या इनिशियली तो आई हैड थॉट उससे पहले आरबीआई का जो एग्जाम था, इट वाज कंडक्टेड द फर्स्ट फेज इन मार्च एंड द सेकंड फेज इन अप्रैल. April. सो आई हैड कि सेकंड फेज अप्रैल का, इट वाज ऑन फर्स्ट अप्रैल ओनली. तो आई थॉट आई विल हैव सफिशिएंट टाइम, 1 month. I'll prepare for EPFO and then I'll write this exam. क्योंकि 1.5 months was there, so I thought 45 days are more than enough for uh, These three preparing subjects of. these 3 subjects which were Mhm. new. तो उसमें मैंने फिर in April I joined the course on EPFO on Okay. EduTap, your course. On EduTap. And Okay. yeah, so I started with basic accounting. मतलब I saw the previous year questions and then I had in mind that at least I should know the basics of accounting and industrial labor laws. So that is how I went about. फिर वो delay हो गया, तो then I thought कि okay, let's continue this for Okay. मतलब every day 2 to 3 hours का करीब I used to study for EPFO. ओके सो जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली जो जीएस के सब्जेक्ट्स थे, द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द इकोनॉमी, ऑल ऑफ दैट, Yes. उसमें तो आप कंफर्टेबल रहे होंगे बिकॉज ऑफ योर Yeah. यूपीएससी प्रिपरेशन. Yes, और sir. ये जो 3 नए सब्जेक्ट्स थे, आपका बैकग्राउंड भी नहीं है बिकॉज यू आर एन नहीं, इंजीनियर, और कोई आपने कॉमर्स में अकाउंटेंसी आपने कभी नहीं, कुछ पढ़ा नहीं होगा. that was तो entirely new for me. entirely new. So Yeah. what source did you use for preparation of these subjects, IR, labor laws, or accountancy? Yeah. So mostly EduTap lectures and the EduTap PDFs that you provide in the lectures. वो Okay. PPTs का ही PDF रहता है. तो एटलीस्ट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का तो मैंने वही लेक्चर्स देखे थे शुरुआत में कि आई गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड द जिस्ट ऑफ इट. एंड लेबर लॉज ऑल्सो, लेबर लॉज में आई डिडंट हैव टाइम फॉर viewing the lectures per se because उस समय मेरा आरबीआई का इंटरव्यू का भी आ गया था. So I Okay. thought I'll just read the PDFs क्योंकि उसमें I thought कि industrial laws और labor laws में it was more of memorization. थोड़ा Yes, बहुत factual information बहुत ज्यादा है. factual information नहीं थी. अगर मैं understanding उससे अगर मेरा नहीं होता था तो then I would watch a lecture अगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आए. But mostly I referred the PDFs. And I had one book रेफरेंस मटेरियल के लिए. अरिहंत की एक बुक थी, अरिहंत पब्लिकेशन की, Okay. specifically for this exam. So Okay. in that previous year questions were compiled in one place. So I would see the questions and then उससे related revision material type भी था उसमें. So that I referred for these subjects. Okay. So अगर आप जैसे आपने कहा कि you use the video lectures for Yeah. some part of the course, then you used PDFs for memorization. Yeah. How much time do you think कि ऐसा एस्पिरेंट जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है अकाउंटेंसी में या फिर इंडस्ट्रियल लेबर लॉज के अंदर, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल है, तो कितना टाइम आप एक एवरेज स्टूडेंट को लगना चाहिए इन प्रिपेयरिंग दीज 3 न्यू सब्जेक्ट्स इफ एन एस्पिरेंट इज कमिंग फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड and has decided to prepare, let's say, for EPFO examinations? So how much time do you think it would take to cover these 3 new topics decently? सर आई थिंक ज्यादा टाइम उसमें अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट में, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, उसमें ज्यादा टाइम हमें डिवोट करना पड़ेगा बिकॉज स्टार्टिंग में उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो क्रेडिट डेबिट एंड उसके रूल्स. बिकॉज इंडस्ट्रियल लॉज एंड लेबर लॉज का फिर भी हमको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, yes. फॉर यूपीएससी इकोनॉमिक सब्जेक्ट में. एंड उसमें लॉज हैं, उसमें मेमोराइजेशन है. यू जस्ट हैव टू नो द की एक्ट, मतलब की फीचर्स ऑफ दोस The एक्ट्स, provisions of the act, उसमें क्या provisions of the चीजें हैं. act. हाँ. Yeah, so we are a bit more familiar with it. लेकिन अकाउंटेंसी क्योंकि entirely new है, so we have to focus more on that. I think Okay. if we give 2 months to commerce and accountancy, Yes. एक comfortable level तक आप आ जाओगे कि हाँ at least you can solve the questions that are being asked from the exam. Okay, so 2 months, let's say, is the time that you एक एस्पिरेंट को लगेगा. और पर डे हम कितने घंटे डिवोट करें इन सब्जेक्ट्स को? 2 महीने अगर हम. मिनिमम 5 to 6 hours तो आपको करना ही चाहिए. ठीक है. लेकिन उस it depends on how you study. Everyone has a different way of studying and the amount of information you grasp within that time is also different for everyone. Obviously, So मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि आप yeah, कितना तेज ग्रास्प कर पा रहे हैं, आप yeah, कितना अच्छे से उसमें एफिशिएंटली इसको पढ़ पा रहे efficient दे पा रहे हैं, हैं. तो उसके हिसाब से 5-6 आवर्स और थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द हाँ, एस्पिरेंट. लेकिन 2 मंथ्स मुझे लगता है आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि
एनफ होना चाहिए, आप इन न्यू सब्जेक्ट्स को एक इस डिसेंट लेवल तक प्रिपेयर कर सकते हो कि एग्जाम में जाके यू कैन एग्जाम में आप परफॉर्म वेल। परफॉर्म कर सकते हो। यस। ठीक है अनिमेश, ये तो चलो अभी बात हो गई आपके एग्जाम की स्ट्रेटजी की, थोड़ा सा यस। ये भी बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फॉर द सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन इफ आई आस्क यू यस। कि क्रेडिट अगर आपको देना, आपका हार्डवर्क है, आपने मेहनत की है इसके लिए, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। Apart from yourself, if you want to give credit to someone or something that you have succeeded in this examination, तो वो कौन सी कुछ एक दो चीजें होंगी, तीन चीजें होंगी जिनको आप ये क्रेडिट देना चाहेंगे? Sir, definitely my family, which Okay. has been my support throughout this journey, because every time, even if I didn't manage to clear the UPSC final interview and all, so they Mm-hmm. have stood by me, my friends, and my family includes everyone, my grandfather, my parents, my uncle and aunt. So they have always been very supportive and they've always been very motivating. Don't worry, move on to the next exam, you'll clear in the next exam. So that is very important during a preparation, because sometimes इट गेट्स क्वाइट it gets प्रेशर dejected. Yeah, प्रेशराइज ना, you क्योंकि ऑब्वियसली yes. आप, तो यही मेरा नेक्स्ट सवाल भी होने वाला था। जैसे हाँ, एज यू सेड कि आप फैमिली को क्रेडिट दे रहे हो, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट, फैमिली मेंबर्स अगर आपके साथ होते हैं तो ये जो yeah, मोटिवेशन है, आपकी एनर्जी वो बनी रहती है। तो yes, एज यू सेड दैट यू हैव अपीयर्ड फॉर इंटरव्यूज and you yeah, have touched yeah. the finishing line for various examinations but were just not able to cross the finishing line. Cross the तो yes. स्ट्रेस होता होगा बहुत, कई बार ऐसा लगता होगा कि इतनी मैंने मेहनत की है और जस्ट मैं सही टाइम पर कुछ गड़बड़, कुछ कमी रह रही है शायद। तो हाउ डिड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज की स्ट्रेस जो होता है और हर एस्पिरेंट को होता है जो इतनी मेहनत करता है, कुछ स्ट्रेस बस्टिंग के लिए कुछ एक्टिविटीज, कुछ हॉबीज आपने ऐसे कुछ डेवलप किया, या हाउ डिड यू मैनेज योर स्ट्रेस, हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट एंड डिसाइड Yes. करते थे कि अब दोबारा से पढ़ते हैं? Uh, Sir, I think the most important thing is you have to keep the belief in yourself intact. Matlab, I also took it in a way कि if I'm reaching the interview stage, then I'm also doing things right. यस। कि that I'm reaching at that stage. Only have to tweak a little bit and understand where I am lacking. तो ऐसा ओके। नहीं है कि आई एम नॉट एबल टू क्लियर एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, मेरे को बस फाइनल स्टेज में थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा. सो दैट वाज वन वे ऑफ थिंकिंग दैट आई वेंट अबाउट. थोड़ा बहुत स्ट्रेस कभी कभी होता था, लाइक स्पेशली जब रिजल्ट जस्ट आया है एंड यू डोंट सी योर नेम इन द फाइनल लिस्ट, देन यू गेट डिजेक्टेड, बट यू हैव टू पिक योरसेल्फ अप विद इन अ वीक और सो. आप break low, you relax a bit, you talk to your friends, you talk to your family, and then you have to get back in that frame of mind ki, okay, we have to start with the next exam. And in between, I like to read. I like reading fiction novels, and I also like watching anime. So that एनिमे, was ओके। yeah. So that was one my go-to ki, okay, if I have to take a break and all, so I'll तो do एनिमे all का that. जो फैंडम है वो तो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ अनिमेश, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेस So बस्टर। बिना कुछ yes, it is ज्यादा very good सोचे stress यू हैव buster. टू जस्ट एंजॉय हाँ, योरसेल्फ एंड देन yes. अगेन दोबारा से आप पढ़ने के लिए बैठ सकते हो। तो इस ठीक है, तो इसी तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि जैसे वेरियस एग्जाम्स में आपने अटेम्प्ट्स दिए और वहां पे जस्ट आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उससे Yeah, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ होगा शायद, कि इसका मतलब है कि बस मुझे लगे रहना है और yeah. किसी एग्जामिनेशन में, किसी अटेम्प्ट में तो जरूर मैं क्वालिफाई करूंगा ही। Qualify कर जाऊंगा. Yes. बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी बात है। तो एक चीज़ और, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपने 1 साल काम भी किया है Yeah. प्राइवेट सेक्टर के अंदर, एंड यू वर इन अ हाँ वेरी जी. गुड पोजीशन, यू वर इन अ वेरी गुड जॉब, कमिंग फ्रॉम अ Yes. वेरी रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो Yes. क्यों आपने ऐसा डिसाइड किया कि ये जॉब मुझे नहीं करनी है और मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए या यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है? सर, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन का मेरा हमेशा से था, इवन फ्रॉम कॉलेज. ओके। बट आई ऑल्सो वांटेड टू सी ओके हाउ एन इंडस्ट्री वर्क्स, लाइक या हाउ डू यू एक्चुअली वर्क इन एन इंडस्ट्री. तो उसके लिए आई सैट फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट selected in for Reliance Industries. हम्म। So I worked there for a year, and then I decided कि okay, now it's time to start my preparation full fledgedly for civil services examination. सो आपने तो कुछ फिर then I एक्सपीरियंस गेन किया कि कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में कुछ वर्क एक्सपीरियंस आपने गेन किया, एंड देन यू डिसाइडेड कि yeah. जो मेरा ड्रीम है, दैट आई वांट टू बी Yes, अ sir. सिविल सर्वेंट, वो मैं ड्रीम यहाँ पूरा करना चाहता हूँ, वो ड्रीम आपने अचीव भी कर लिया है अभी। Yes, sir. अभी और भी आगे मुझे लगता है आपको कि यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशंस एज वेल इन द फ्यूचर।
यस सर। ओके ओके, ठीक है। इसके साथ मैं जानता हूँ कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ईपीएफओ एग्जामिनेशन के अंदर थे, जिनको अगर देखा जाए तो बहुत अलग अलग फील्ड से आने वाले सब्जेक्ट्स हैं। इसमें हिस्ट्री यस भी सर। है, इसमें मैथमेटिक्स भी है, जो आपका करंट अफेयर्स की नॉलेज भी है। तो कैसे यस मैनेज कर सकते हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स को? आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आदत सर। होगी आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स मैनेज करने की, लेकिन ईपीएफओ में नए सब्जेक्ट्स भी आए, और हाँ। जैसे सी सैट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं यूपीएससी के लिए वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो हाउ डिड यू मैनेज हाँ। दीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स? अलग अलग स्ट्रैटेजी थी सब्जेक्ट्स को लेकर के, या एक इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ प्लान आपने बनाया था कि इस तरीके से मुझे पढ़ना है? So, sir, GS subjects ka already knew the sources that I had to refer to. So ओके for polity, I studied from Lakshmikant, जो major topics हैं. ओके The most important is कि पहले आप previous year questions analyze करो कि what are the major topics that the questions are being asked from. ओके From that, I referred to my basic sources, जो Lakshmikant for polity, and for modern India जो freedom struggle है उसके लिए I referred to um, that book, Spectrum. स्पेक्ट्रम। ओके Spectrum publication की that book I referred. And one thing I have noticed is UPSC is also asking questions from themes, the new NCRTs that are जो there, हिस्ट्री की नई एनसीईआरटी history बुक्स की हैं। NCRTs. So one question this year also, in this exam also came from ओके that book directly. So ओके, we should also read that book for modern India. मॉडर्न इंडिया प्रिपरेशन। Yeah, themes, new NCRT. ओके, And for science, I refer to Lucent GK जो है, because at one place you will find a lot of information regarding science ठीक है। subject. तो जो जनरल साइंस वाला जो हाँ, सब्जेक्ट है general उसमें science, आप लूसेंट के अंदर आपको Lucent वो में, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसपे अक्सर हाँ क्वेश्चंस आते हैं वो मिल जाते हैं वो आपको वहाँ मिल पे। जाता है आपको Lucent में. ठीक है ठीक है। और for commerce and accountancy and industrial labor laws उसके लिए तो मैंने EduTap का मटेरियल रेफर किया था, ठीक है and उस पे ज्यादा फोकस किया था because it was new to me. And for maths and English, so ये तो CSAT में भी है, and I was also appearing for RBI exam before that. यस। तो वो मेरा उससे कवर हो गया था उसकी प्रिपरेशन से. I did not need to do much related to वो that. आपके बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन से कोइंसाइड भी कर Yes रहा sir. था। तो ऐसा अनिमेश अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, आई थिंक यू वुड आल्सो एग्री दैट इफ यू आर अपियरिंग फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशंस, इफ दे हैव अ ग्रेट डील ऑफ ओवरलैप और कोहेरेंस, तो वो आपकी प्रिपरेशन भी बेटर करता है हर एग्जाम के लिए, आपके जो Yes चांसेस sir. ऑफ सक्सेस हैं उसको भी बढ़ाता है। तो वी मस्ट बी चूजिंग कि हम किन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। ऐसा ना हो कि हम एक एग्जाम जिसमें सिलेबस बिल्कुल एबीसीडी है और दूसरा एग्जाम जिसमें क ख ग घ पूछा जा रहा है, तो ये बिल्कुल अलग एग्जाम्स की अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो ज्यादा शायद हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। वुड यू एग्री विद दैट? Yes sir, I would agree with that क्योंकि if overlap होता है then you also feel confident कि at least I already know a lot that is अबाउट दिस going to be सिलेबस। asked about this syllabus, so ओके। it gets easier. अच्छा अनिमेश, करंट अफेयर्स के सोर्सेज आप क्या यूज करते हैं? जैसे आपने यूपीएससी के लिए भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ना Yes होता sir. होगा, ईपीएफओ के लिए भी आपने पढ़ा है, आरबीआई के लिए भी है, लेकिन करंट अफेयर्स के ओरिएंटेशन, इफ वी लुक एट द ओरिएंटेशन, द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो हाँ. सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं या यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और जो Yeah. करंट अफेयर्स का टाइप ऑफ क्वेश्चंस आरबीआई में है वो अलग है थोड़ा सा। Yes सो sir. हाउ डिड यू कवर द करंट अफेयर्स, एंड अगर आपको डिफरेंस लगता है तो क्या मेजर डिफरेंस लगता है बिटवीन द ओरिएंटेशन ऑफ करंट अफेयर्स कवरेज फॉर दीज एग्जामिनेशंस? Sir, regarding orientation for RBI and other examinations, it's a lot more factual ओके, as compared to UPSC. And facts as in they ask persons in news, places in news, प्लेसेस इन कोई न्यूज़, यस। sports related, a lot of जैसे जो questions are ट्रिवियल asked. क्विज वाली हाँ जो जो हाँ नॉलेज होती है। yeah, trivia questions are more asked in RBI as well as EPFO और ओके, किसमें. So for that, one source was EduTap's monthly जो आपका वीडियो आता है करंट अफेयर्स for की। 100 MCQ questions. So that यस, is actually very helpful. थोड़ा मेरा ओके, आरबीआई की प्रिपरेशन के टाइम पे भी जो करंट अफेयर्स मैंने पढ़े थे, दैट हेल्प क्योंकि एग्जामिनेशन वाज सपोज्ड टू बी हेल्ड इन मई, तो अ यस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम दैट एरिया ओनली. एंड मार्च तक का तो मैंने आरबीआई के लिए किया ही था, मार्च अप्रैल तक का. सो ओके, दैट हैपेंड टू आई कुड रिटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट. So one is EduTap ka, and there is one magazine that I refer to, eDrishti's annual reminder. एनुअल So रिमाइंडर। ओके, yeah, annual reminder for eDrishti. So that is something that I refer to. मेरे को वो easy लगता है पढ़ना. So and it covers basic news, national, international, ओके, जो any important day of the year, places, sports.
तो ओके, जिन I पे feel क्वेश्चंस अक्सर comfortable. बन हाँ, जाते जिन हैं, पे अगेन वही क्वेश्चंस जो आते हैं, ट्रिवियल yes, yeah, इंफॉर्मेशन की हमने बात की। yeah, ओके, ठीक है अनिमेश। इसके साथ अनिमेश, जैसे रिवीजन भी करना बहुत जरूरी हो जाता है, इतने सारी चीजों के हाँ, बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए yes क्या sir, आपकी कोई खुद की स्ट्रैटेजी थी, और अपने खुद के कुछ नोट्स आपने बनाए? यूपीएससी के हाँ, लिए तो आपने बनाए होंगे, सिविल सर्विसेज के लिए yes अज्यूम, sir, yeah. ईपीएफओ एग्जाम्स के लिए भी आपने किया क्या कि खुद के कुछ नोट्स आप बना रहे हैं, उनको रिवीजन के लिए यूज कर रहे ईपीएफओ के लिए सर एक तो आपके एड्यूटैप के रिवीजन लेक्चर्स थे आखिरी में हैं? बिफोर द एग्जाम। आई थिंक फॉर अबाउट 2 weeks रिवीजन लेक्चर्स चले थे। सो यस, आई यूज टू वॉच दोस, तो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आई कुड रिकॉल थ्रू दोस वीडियोस। उसके अलावा फॉर आई हैव रिवीजन मॉड्यूल्स फॉर पॉलिटी एंड द जीएस इंडियन सब्जेक्ट्स। फ्रीडम स्ट्रगल जीएस सब्जेक्ट्स फ्रॉम माई यूपीएससी प्रिपरेशन, तो उसका मैं उसी से रिवाइज किया था। And apart from that, that Arihant book, so अरिहंत, EduTap lectures and that Arihant book I used to refer for quick revision, and yeah. ओके, ओके। एंड इफ आई आस्क यू कि सबसे ज्यादा आपको ईपीएफओ की प्रिपरेशन में मुश्किल अगर कंपोनेंट, कुछ मुश्किल एज इन जिसको आपको कवर करने में आपको लगा कि मुझे बहुत ज्यादा समय लग रहा है एज कम्पेयर टू द सब्जेक्ट, तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट रहा होगा जिसको आप कहेंगे कि हाँ ये थोड़ा ट्रिकी था, जिसमें मुझे ज्यादा टाइम लगा? Sir, I would say industrial laws and labor laws, because it was a lot of memorization. You had to study ओके, a lot. और वो उसमें चार, काफी नई चीजें हाँ, हैं जो आपको याद नई करनी पड़ चीज रही थी, हैं। yes, वो लेबर कोड्स चार ने जो आए थे। यस, So यस, यस, you had to, a lot of information you had to remember and or try to remember. यस, यस। So that I इससे think ये was भी पता चलता difficult. है कि भले ही आप यूपीएससी में आप अच्छा इतना परफॉर्म कर रहे थे, बट स्टिल इफ देयर इज समथिंग न्यू दैट यू हैव टू Yeah. अगेन रीड, देन यू हैव टू वर्क Yes, हार्ड sir. फॉर दैट, आप उसको You have to टेकन फॉर work hard ग्रांटेड for नहीं it. ले सकते। No, sir. ओके, अब थोड़ी सी हम रिक्रूटमेंट इसकी हमने बात की, इंटरव्यू का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यू हैव Yes, फेस्ड sir. इंटरव्यूज Yeah. इन द यूपीएससी एज वेल, इन द आरबीआई एज वेल। Yes, sir. ईपीएफओ के लिए भी आपने इंटरव्यू में जब अपीयर किया, तो Hmm. सबसे पहले तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? क्या कुछ अलग स्ट्रैटेजी आपने यूज की ईपीएफओ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए? सर अलग स्ट्रैटेजी तो नहीं, बिकॉज अ लॉट ऑफ माय बेसिक जो बायोडेटा का इंफॉर्मेशन होता है आई यस, हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द अदर इंटरव्यूज। अदर इंटरव्यूज। तो माय बेसिक बैकग्राउंड इन्फो रिलेटेड टू माय इंजीनियरिंग, आई नो ओके, व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी फ्रॉम। सो ओके, व्हाट आई started more focused on was about the organization EPFO. But ओके, of course, the most important thing is your DAF. So you have to be very familiar with what you have given in your DAF. So about your place of birth, your state, home state, and your engineering where you have worked. So that is important. Apart from that, sir, I think current affairs is the uh, जो other आसपास important आपकी thing चीजें हो रही हैं उसके बारे में aspect आपको पता you होना have to चाहिए। consider. सो Yes. दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू फिल योर डैफ, वी हैव टू बी वेरी Yeah. केयरफुल, क्योंकि Yes, sir. इंटरव्यू हमारा काफी ज्यादा गाइड होगा विद द हमारे DAF इंफॉर्मेशन दैट से, वी हैव yes. गिवन। Yes, sir. ओके, सो हाउ वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जैसा आपका इंटरव्यू हुआ होगा Yeah. ईपीएफओ के लिए? So it was a very pleasant experience. My interview was in the morning session, so they mostly asked my questions from my DAF only. ओके, So the chairman sir started from IT Roorkee. He saw that I have studied from Roorkee, so he asked questions, a few questions related to Roorkee and the institute. ओके, And then the second member started with what I had been doing in the previous years. So I told him about the civil services preparation. ओके, So he asked me about my optional, and my optional is political science and international relations. पीएसआई, ओके। So PSIR. So PSIR is a very relevant subject for everyone, because you read the news, international relations, and all. So they are एवरीवन हैज एन interested. ओपिनियन अबाउट Yeah. So they पीएसआईआर। have an interest. So two panel members mostly asked me questions on IR related to the Russia-Ukraine war and the ओके, position of China with India एंड यू and वर all that. प्रिपेयर्ड विद दैट, And यू वर प्रिपेयर्ड विद दीस टॉपिक्स? yes, sir. Yes, sir. ओके, I had prepared for these topics, and then I was asked for my hobbies. So I had written reading fiction and watching anime. So they asked me questions related to reading and the they kind of obviously novel. will Yeah, won't be able to ask questions about anime. I'm yeah. still yet to meet a panel which can, No, ask sir. questions They about do ask. They do. I they have. do ask, okay. I read some transcripts, so they know. Okay, it's related to Japanese, and also they do ask questions.
Okay, so we have to prepare for We hobbies have जो to हम prepare for बताते हैं. everything. Yes. Okay, we have to prepare according to that also. Yeah. तो ऐसा तो नहीं होता है जैसे कई लोगों के माइंड में होता है इंटरव्यू को लेकर कई काफी नर्वस होते हैं. आपने तो जैसे आपको भी जब आपने पहली बार इंटरव्यू दिया होगा सिविल सर्विसेज Yeah. के लिए, यू मस्ट हैव बीन वेरी नर्वस. धीरे धीरे वो Yes, sir. नॉर्मलाइज हो जाता है. तो हाँ. क्या आप अगर एडवाइस करना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स को जो अभी देख रहे हैं कि अभी तक उन्होंने इंटरव्यूज फेस नहीं किए हैं, फ्यूचर में वो करने जा रहे हैं, तो ऐसी कुछ एक दो पॉइंट्स जो आपको लगता है कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ बिफोर गोइंग टू दैट इंटरव्यू? क्या पैनल दे ट्राई टू इंटिमिडेट यू? क्या वो ऐसा कोशिश करते हैं जान के, या फिर आपको कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं? किस तरीके का ड्रेस कोड हो, या आप हाँ. किस तरीके के फ्रेम ऑफ माइंड में जाएं जी, इसके बारे में कुछ एक दो पॉइंट्स. Sir, the panel is very comfortable. They make you very comfortable. They are very pleasant, and they want to have a conversation with you. So that is the most important thing. You don't have to get nervous. It's not a question and answer session or a viva round. They want to make conversation, and you have and get to know your opinions. So that is the most important thing that we have to remember. So it's okay if you don't know a few things. You can just say sorry, सो and they'll move on to the next. सो इट इज It's ओके टू से okay. नो, Yeah, मतलब it's अगर okay ऐसा to कुछ, say no. Yeah. इंस्टेड ऑफ And लाइंग या इंस्टेड ऑफ yes, ब्लफिंग. instead of bluffing, it's important to be honest in that interview, because they are very experienced people, and they'll know if you are trying to lie or bluff लाइंग. your way through the interview. So that is one thing. And yes, everyone will feel nervous before the interview. यस. That has happened to me every time, even if I'm used to giving interviews now. But before that, when you are sitting outside the interview room, वेटिंग फॉर you're योर bound चांस. waiting for your call, and you're bound to feel a bit nervous. But once you get inside the room and you start answering the questions, you'll forget everything. You'll forget about everything else. Then it's just the conversation that you'll focus on. So it will happen naturally. So it's nothing to worry about. That ओके. nervousness is a good sign also. You can say that nervousness is a good sign because it means so much to you, but you don't have to इट्स let इम्पोर्टेंट it. फॉर यू एंड यू ऑल्सो हैव Yes. वर्कड हार्ड फॉर दैट. सो Yes. आप बिल्कुल उसके लिए नर्वस थोड़ा होना भी चाहिए. अगर बिल्कुल थोड़ा नर्वस होना नहीं चाहिए. हो तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ भी हो हाँ. सकती है. Yes. ठीक है. ठीक है. इसके साथ अनिमेश, फ्यूचर टारगेट्स अगर मैं आपसे Yes, पूछूं sir. कि फ्यूचर टारगेट्स आपके और क्या हैं, या जैसे अगर आप पीपीएफओ भी ज्वाइन करेंगे, आप Yes, sir. अगर आगे प्रिपरेशन करेंगे दूसरे एग्जाम्स के लिए, क्या ऐसी चीज है जो आप अचीव करना चाहते हैं इन योर जॉब ऑल्सो? हाउ डू यू वांट टू वर्क? व्हाट आर द टारगेट्स दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? Sir, I have one attempt left. So abhi mera immediate target है that I prepare for that one chance, वन अटेम्प्ट. and यस. I hopefully I'll get a better rank next time. यस. Or if not, I'm very happy with working in EPFO as an enforcement and accounts officer as well. And I want to give my best to whatever I pursue. So यस. even in this examination, in this job, sorry, I want to give my best, and make sure that I am there to help other people, because public service was what I was aiming for फॉर since the इनिशियली. last 6 years. So I want to be that version of myself. Yes. Okay, so that though I'm sure of that whatever job you are in, you will be doing your best, and it has been a very very good time, very pleasurable time talking to you और with such a hard working person. और मुझे लगता है कि जितने भी Thank you, sir. एस्पिरेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, आपकी बातों को सुन रहे होंगे, they would also be motivated, to join the civil services and work and give Yeah. service to the society, and also Yes, to sir. be very persistence with their efforts, but they have to persevere. Thank you, sir. कोई भी Yes. चीज अगर आपको एक बार नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब आपको You और have कोशिश to. करने की जरूरत है. You have to keep ठीक working है. hard. एक लास्ट में बिफोर कंक्लूडिंग एक और दो पॉइंट्स. Yes, sir. EduTap, I Yeah. hope EduTap has been helping you throughout your journey for the EPFO examinations. If there are Yes, some sir. things that you would want to say about EduTap, or if you want to give a suggestion or a feedback कि कुछ ऐसी चीजें जो शायद हम improve कर सकते हैं to make us better help our students. Sir, I think EduTap has been very helpful for my preparation, and not just in EPF examination, also in other examinations that I've given, RBI exam and SEBI exam also. I have watched lectures on YouTube that you conduct, or from Okay. the courses. So that has been very helpful to me, especially because in RBI and SEBI, things were new to me. Yes. So
a lot of your videos about how to go about your preparation, what should be the preparation strategy, they have been a lot helpful. And the revision lectures you conduct before every examination, they are especially helpful for students like me, because we are giving different exams. Yes, so So time ka you, हाँ, possibility. time constraint रहता है. So even revision lectures में you get to cover a lot of topics from the syllabus that you are comfortable while you are writing the examination. So Okay. I'm very grateful and thankful to EduTap team for that. Thank you. And we are also, very grateful and thankful that you chose us, and you have given us a cause to celebrate. And Thank you, we sir. wish you best of luck for your future, for this job, and as well as for other examinations or other any targets that you have in your life. And इसी के साथ I would like to conclude, and I would thank you very much, Animesh, Thank you for so much. Yeah. joining in this interview and guiding the aspirants जो अभी future में they will look forward to you, and they will Yeah. be again following in your footsteps. Thank you very Thank you much. so much, sir. Thank you so much.